Hello students, today our topic is concept of sports and environment. Concept means an idea or invention which helps the society is called concept. Sports and environment means sports environment is the conditions and circumstances in which sports persons perform or indulge in sports activities. Sports related person such as coaches, teachers of physical education and other officials must know and pay proper attention to sports environment. Environment plays an important role in the quality of an athlete's performance. Environment जो है means वातावरण जो है, place means engage in activity, important role. In society you have a particular position in the quality means the standard of an athlete's performance. Athlete performance means carrying out of specific physical routines by one who is trained in physical activity. There are many things. There are many things means बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. The athlete can do. Athlete means a person who is proficient in sports and other forms of physical exercises. Can do means showing determinations or adaptations means the action or process of being adopted. He can make to prepare him better. वो अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर सकता है. For variations in the environment, either expected or unexpected. Variation in the environment होता है a group of organisms of any species caused either by genetic differences or by the effect of environmental factors, either used for one or the others. Expected होता है anticipated जिसकी कोई संभावना हो. अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनएंटिसिपेटेड जिसकी कोई संभावना ना हो. ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं. एन एथलीट हु ट्रेंड एट सी लेवल, जो एथलीट सी लेवल पर ट्रेंड किए जाते हैं. ट्रेन मीन टीच किए जाते हैं. सी लेवल होता है द लेवल ऑफ द सी सरफेस इज फोर्स टू मेक, उन पर दबाव बनाया जाता है कंपल्सरी टू make rather than extensive physiological adjustment to compete successfully at high altitude. Rather extensive, rather mean used to indicate, extensive होता है effective large area. तो वो large area कौन सा है? Physiological adjustment means the improved ability of that organism to cope with its changing environment. To compete successfully, compete होता है take part, successfully means the result at high altitude. High altitudes means distance above the sea level. Training in cool climates does little to prepare the athlete to compete under conditions of extreme heat and humidity. ट्रेनिंग इन कूल क्लाइमेट्स, जिन लोगों को ट्रेनिंग जो है ठंडी जगहों पर दी जाती है. ट्रेनिंग मीन्स द एक्शन ऑफ टीचिंग. कूल क्लाइमेट्स होता है ए क्लाइमेट करेक्टराइज्ड बाय कोल्ड टेम्परेचर. डज लिटिल टू प्रिपेयर द एथलीट टू कॉम्पिटिट. कॉम्पिटिट होता है टू टेक पार्ट अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम हीट. Extreme heat means very excessive hot weather, and humidity means quality of being humid. Similarly, sudden exposure to cold can have a drastic influence on the athlete's performance. तो इसी similarity means state of being same. Sudden exposure means lying open that were hidden under the blanket. Exposure to cold, cold means low temperature, can have a drastic influence होता है
acting rapidly on an athlete's performance. Athlete performance means carrying out of a specific routines by one who is trained in physical activity. If they have not had an opportunity to acclimatize to the cooler environment, अपॉर्चुनिटी होता है चांस, एक्लिमेटाइज होता है एडॉप्ट करना, to the cooler environment means keeping thing cools, that is called a cooler environment. Environment factors include exposure to extreme of heat. Environmental factors means abiotic and biotic that influencing living organisms includes होता है consist of exposure to extreme heat. Extreme heat हो गया is the period of excessive hot weather. Extreme heat, cold, extreme exposure of cold or due to low air temperature, rain and wind, which all affects a body ability to maintain normothermic temperature and contest at a high altitudes. High altitudes mean distance above the sea levels. Modern concept. Modern means present time. Concept means notion. The word environment itself indicates, जो environment जो शब्द है itself indicates होता है point out करता है that surrounds होता है condition around us, हमारे इर्द गिर्द कैसी कंडीशंस है, इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं. द इन्वायरमेंट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग, वट एवर वी लुक अराउंड इज ए पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. द इन्वायरमेंट रेफर्स क्या करता है, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, जो चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इज ए पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, वो हमारे वातावरण का क्या है, एक हिस्सा है. हेल्दी इन्वायरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ एज इट इज सेफ. हेल्दी इन्वायरमेंट मीन्स environment healthy is focused on natural and built environment for the benefit of human health is called healthy environment. Is the foundation means base of good health. Good health क्या होती है, good health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease is called good health. As it is safe mean it is free from danger. Environment plays an important role in the child development. Environment जो वातावरण है वो बच्चे की ग्रोथ होने में मदद करता है. चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स involves the biological, psychological and emotional changes that occur in human beings between birth up to adolescence is called a child development. Post concept, post means जो गुजर चुका हो, concept होता है notion. In past the environment meant the physical and biological conditions affecting our lives. तो post concept में वातावरण को मीनिंग क्या था, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस. फिजिकल कंडीशंस क्या होती है, द स्टेट ऑफ द बॉडी और बॉडली फंक्शंस. और बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या होगी, मीन्स connected with the scientific study of animals, plants and other living things is called a biological conditions affecting our lives. वो हमारी lives means belonging to bare people's livings, affecting उनकी जिंदगी पर उसका असर पड़ता है. What according to the modern concept, लेकिन जो modern concept है means present time notions जो है उसका क्या है, ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस. इट आल्सो इंक्लूड्स द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो जो पोस्ट कंसेप्ट था उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस अफेक्ट करती थी, मगर जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें फिजिकल
एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है वो इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस भी उस पर इफेक्ट करती हैं। सोशल कंडीशंस होती हैं इज द सिचुएशन यू हैव इन ए सोसाइटी। इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं रेफर टू present a state of economy in a country or a region is called a economic conditions that shape our lives, जिससे कि हमारी ज़िंदगी को क्या मिलती है, शेप मिलती है, शक्ल मिलती है। मीन्स शेप ऑफ आवर लाइव्स मीन्स देयर आर फ्यू पैरामीटर्स through which each one of us live our lives, and there are few pre-decided factors which sure to make impact your life is called shape our lives. Environment is a system that comprises of variety of elements. Environment is a system, environment क्या है, एक procedure है, means a particular way of doing something है, that comprises means उसमें consist क्या है, variety of elements, variety means number of elements means constituents हैं उसमें। these elements include temperature, these means उन constituents में क्या क्या है, number one is the temperature, temperature means how hot or cold something is। wind means air that is moving across the surface of the earth, and humidity means is the concentrations of water vapor present in the air। plants, a living things that grows in the ground and usually has leaves is called plants। animals, animals means an animal is a living creature such as a dog, lion, rather than a word insect or human being। man, a person, and soil, the substance that plants, trees, etc. grow in the earth is called soil। water made features, water made features mean a small pool, stream, or other structures that has water in it is called water made features। then conclusions means an opinion that you reach after thinking about something carefully। today the elements of sports environment, today means this day, the elements means the constituent of sports environment। sports environment के कौन कौन से elements हैं, means sports stadium or sports complexes should be well planned, and people should have a positive attitude towards sports activities। have been damaged, damaged means when something is spoiled due to many reasons, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जे स्पॉइल हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। which have adversely affected the health of human beings, जिसके उसके बुरे असर जो हैं वो ह्यूमन बींग्स मीन्स लिविंग पर्सन की सेहत पर पड़ रहे हैं। एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट आर एक्टिंग adversely, they are harming something। in modern age its importance has been realized, modern age means at the present time, इसका जो महत्व है environment has been realized means to know and understand something is true, and many organizations are working to promote and develop sports environment। many organizations, organization is an entity such as company or institutions are working to promote, कोशिश कर रहे हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। promote means to encourage something, to help something to happen, and develop sports environment, developing to grow slowly, environment को develop अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। sports environment has balance, तो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मीन सिचुएशन इन विच different or opposite things are of equal, that is called a balance। form of a natural, natural होता प्राकृतिक तौर पर, and man made environments mean जो इंसान ने बनाया हुआ environment है। अब इसको
डिक्शनरी मीनिंग्स में क्या कहेंगे? ऑल लिविंग थिंग्स, क्लाइमेट, वेदर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट इफेक्ट ह्यूमन सर्वाइवल and economic activity is called a natural environment. Man-made environment is referred to as the surrounding made by human beings to provide facilities is called man-made environment. It does not cause much disturbance in ecosystems. तो अगर ये मैन मेड और नेचुरल इन्वायरमेंट में बैलेंस होगा तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा किस पर? डिस्टर्बेंस इन ecosystems. Ecosystem means all the plants and animals in a particular area considered together with their surroundings is called ecosystem. We should encourage, हमें encourage करना होगा. Encourage होता है confidence to somebody, sport and motivate, और motivate means to provide a reason for doing something. कारण देना होगा कि हम स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट को क्यों बैलेंस रखना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं. द पब्लिक टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट. पब्लिक मीन्स व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इज कॉल्ड, नंबर ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट देयर इज कॉल्ड पब्लिक. टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, इम्प्रूव होता है बेटर करना, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.